बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री के अहम शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अपने नोटबुक पर साथ साथ नोट करते जाएं या फिर स्क्रीनशॉट्स ले लें। ये सवालात बार बार पास पेपर्स में पूछे गए हैं और इंशाल्लाह अब भी इन सवालात में से ही पेपर आएगा। 10th क्लास केमिस्ट्री गेस्ट पेपर 2024 मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑल चैप्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एस्टैब्लिश्ड, रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। चैप्टर 9 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। व्हाट इज मीट बाय अ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिएक्शन, why reaction do not go to completion, give the microscopic characteristics of forward reactions, reverse reactions and dynamic equilibrium, state the law of mass action and derive the expression for the equilibrium constant for a given reaction. Question number 4, explain the importance of equilibrium constant. And the last question है chapter 9 का, describe a reversible reaction with the help of an example and graph. चैप्टर 10 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, राइट लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड-लोडी थ्योरी, डिफरेंशिएट बिटवीन लीवियस एसिड एंड बेस, व्हाई हाइड्रोजन आयन एक्ट एज अ लीवियस एसिड, गिव 4 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डिफाइन पीएच, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर, डिफाइन पीएच ऑफ सॉल्यूशन, डिफाइन इंडिकेटर्स, what are salts, give 2 examples. Give 4 uses of salts, write 4 uses of sodium silicate, calcium chloride and calcium oxide. And last question है chapter 10 का short, differentiate between acidic salts and basic salts. chapter 10 के important long questions देखते हैं। compare the physical properties of acids and bases with example. Explain the Arrhenius concept of acid and bases with examples. What are limitations of this concept? Question 3 है, explain Lewis concept of an acid and a base. Question 4, what are indicators? How they are used to determine pH of acidic, basic and neutral solutions. Question 5, define salts, explain their characteristics and uses of some important salts. Question 6, give the applications यहाँ फिर इसके uses of some important bases. Question लास्ट है 7, explain Bronsted-Lowry concept of an acid and base with example. Chapter 11 के most important short questions. Define vital force theory, write definition of organic compounds, define catenation, briefly explain molecular formula with example, write functional group of alcohol, how coal is formed, define functional group, what is dot and cross formula, define open chain and acyclic compound, define acyclic compound, non-benzoic compounds, define heterocyclic compounds with example, define isomerisms, how many isomers pentane have. चैप्टर 11 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। वैसे आप इनको जो है स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि 2022 के जो पेपर हुआ था उसमें इसमें से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आया था। चैप्टर 12 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स, डिफाइन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, what is meant by hydrogenations of alkenes, give uses of ethane and methane. Chapter 12 के important long questions. Define hydrocarbons, how are they classified, explain methods for preparation of alkanes and alkenes, discuss physical properties of alkenes and alkynes, write uses of ethane and methane and acetylene. लास्ट क्वेश्चन है 5, गिव केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स।
चैप्टर 13 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, डिफाइन पॉलीसैकेराइड्स एंड गिव देयर प्रॉपर्टीज, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, डिफाइन अमाइनो एसिड, गिव इट्स जनरल फार्मूला, differentiate between essential and non-essential amino acid, write sources and uses of vitamin A and vitamin D. Question number 7 है carbohydrates and their uses, difference between ghee and oil. Question 9 function of DNA. Question 10 types of vitamins. And last question 11 है how you justify RNA works like a messenger. Chapter 3 important long questions. Define monosaccharides and oligosaccharides, give their characteristics, give uses and sources of carbohydrates, define amino acid, explain how are they building blocks of proteins. Question 4 explain the sources and uses of proteins and lipids. Question 5 define vitamins, discuss the types, sources, uses and importance of vitamins. Also write the effects of deficiency of vitamins. Last question 6 what are carbohydrates, how monosaccharides are prepared. क्वेश्चन चैप्टर 14 के इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एटमॉस्फेयर एंड इट्स स्फेयर्स, इनकी डेफिनेशंस करनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट, नेम द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, डिफाइन पोल्यूटेंट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट, वाई CO2 is called greenhouse gas. Carbon dioxide is responsible for heating up atmosphere. How? Effects of acid rain. Define ozone hole and where was it notices first. Effects of ozone depletion. Where the ozone layer is found. How acid rain increase the acidity of soil. Why CO is considered a health hazard. Last question है 15 how sulfur containing compound are emitted naturally. चैप्टर 14 के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर 15 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ वाटर राइजेज इन प्लांट्स, फोर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, डिफाइन कैपिलरी एक्शन, वाई द वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर, soft water and hard water, how temporary hardness of water can be removed by Clerk's method, define Boiler scales, how are they removed, why are pesticides and fertilizers used, why non-polar compounds are insoluble in water, how water rises in plants, disadvantages of detergents, name some waterborne disease. लास्ट क्वेश्चन 13 है डिफाइन फ्लोरोसिस। चैप्टर 15 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, कॉजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर एंड मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस। क्वेश्चन 2 इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड देयर इफेक्ट्स। क्वेश्चन 3 इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। क्वेश्चन 4 एंड लास्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन वाटरबोर्न डिसीजेस। चैप्टर 16 लास्ट चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। डिफाइन मेटलर्जी, डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, स्टेट ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, डिफाइन रोस्टिंग, हाउ इज इट कैरिड आउट, रॉ मटेरियल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस, एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस, पेट्रोलियम, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, हाउ रोस्टिंग इज कैरिड आउट, differentiate between crude oil and residual oil, difference between diesel oil and fuel oil, which raw material are used in the manufacturing of urea. Last question 14 है how NaHCO3 is converted in Na2CO3. चैप्टर 16 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। क्वेश्चन 2 है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेज प्रोसेस। क्वेश्चन 3 प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया।
नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के 2024 गेस्ट पेपर्स अपलोड होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।